ओके क्लास पे तो इट्स योर चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर 8 वर्ब ओके एंड द पेज नंबर इज 36 पेज नंबर इज 36 and the chapter is 8 verbs. Okay, so it's your chapter. Yes, so point 1, first of all we have to discuss the definition of verb. Okay, verb means kriya, क्या काम हो रहा है, कोई काम होना या करना, it is verb. ठीक है, so verb is a word. Verb is a word or set of words which tells us an action done by the subject or shows the state of the subject. Subject जो work कर रहा है means I am a subject. Okay, so I am teaching you. I am teaching you. So I is the subject. For example, I am teaching you. Okay, so I is a subject, am is a helping verb, teaching is a main verb, and you is an object. It is an object. Okay, I subject है, am is a helping verb, teaching is a main verb, and you is an object. ठीक है? Okay, so let's start. Verb is a word or set of words which tells us an action done by the subject or shows the state of the subject. Okay, example, the dog ran after the cats. The dog ran after the cats. So the dog is a subject, ran is a verb. Okay, after the cats is an object. So it is an object. Okay. Now here is an exercise work. Beta, we have two types of verbs. We have two types of verbs. First is, now focus please. We have two types of verbs. First is helping verb. Helping verbs. Okay, we have lots of helping verbs. And the next one is main verb. Main verbs. Helping verbs, for example, is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, must, should, shall. So these are helping verbs. Main verbs means drinking, eating, walking, playing, teaching, studying, reading, writing. So these are main verbs. ठीक है, इनको मेन वर्ब कहा जाता है. और जो मैंने अभी आपको बताया है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है. बट है क्या, इसको एक नाम क्या दिया जाता है, वर्ब. तो क्या बोलेंगे हम, वर्ब बोलेंगे, वर्ब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. So here is an exercise work. Underline the verbs in these sentences. Underline the verbs in these sentences. In every sentence we have to underline the verb. Okay, the dog found a piece of bone. Okay, so what is the formation of a sentence? Subject plus helping verb plus verb plus object. So it is the formation of a sentence. किसी sentence को आप form कर रहे हो तो ये आपका formation होगा. पहले subject लिखेंगे, उसके बाद helping verb होगी, उसके बाद verb, उसके बाद object. So in this sentence, ये the dog is a subject and found is a verb. Okay, here is plugging is a verb. So now it's your work.
to fill the exercise work or underline the verbs in these sentences. Now do fast. You have 2 minutes to fill your exercise work now. So our next topic is subject verb agreement. Subject verb agreement. Okay, look at the sentences below. She is rich. You are an obedient child. They are friends. He is intelligent. Children are playing. Elephants have big ears. Okay, so how can we form a sentence? How can we form a sentence with a verb? Next page, open page number 37 everyone. Now, in these sentences, अभी हमने ऊपर sentences को read किया. In these sentences, the verbs agree with their subjects in number and person. A singular subject takes a singular verb. ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे एंड इफ यू हैव प्लूरल सब्जेक्ट देन यू यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे. When two or more singular subjects are joined by and, they require a plural verb. जब and का यूज करके मोहन and सोहन, मोहन and सोहन, there are two names but they are joined with the conjunction and. इन दोनों को and के साथ जोड़ा गया है. तो आप वहां पर प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे. मोहन and सोहन are friends. मोहन and सोहन are friends. Okay, so now please focus. Now look at the screen. We have subjects. For example, he, she, it. ठीक है, we, you, they. ठीक है, आप इनके साथ यूज करते हैं. ही, शी, इट के साथ आपको यूज करना होता है इन प्रेजेंट और इन पास्ट. इन प्रेजेंट वी यूज इज विद ही, शी, इट. ही, शी, इट के साथ आप इज यूज करेंगे. पास्ट में आप वॉज यूज करेंगे. ओके, वी, यू, दे के साथ आप दे के साथ आप यूज करेंगे आर. इन प्रेजेंट आर. इन पास्ट वर. क्या यूज करेंगे आप? हैज. एंड प्लूरल में यूज करेंगे आप हैव. और हैड. हैड को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आप हैड यूज करते हैं. ठीक है, now it's time to fill the exercise work with subject verb agreement. Okay, now focus on the screen.